Hello friends, good morning all. Welcome to my blog on linear equations. Here we are going to study certain things about linear equations, their characteristics. Also we are going to do certain questions based on linear equations. So let's get started. First of all, let's see what linear equation is. Any equation which is in the form of ax plus b, where a and b are constant, that is fixed, having fixed value, and x or any variable, x is a form of variable, and also having certain mathematical operations like plus, minus, division, multiplication, or anything. So any such form which is ax plus b equals to 0, or any other term, ax is one term, b is other term, there can be two or more terms. Okay, so in linear equation, which consists of constants, which consists of variable, mathematical operation, number of terms. Also, this linear equation has an highest degree of 1. Highest degree of 1 means its variable having an exponent value of 1. Here, the ax plus b equals to 0. In this linear equation, the variable is x and its exponent value is 1. So, we can say that linear equation has an exponent value, its variable has an exponent value 1, its highest degree is 1, and such equation is linear equation. Linear equation, as we know that linear equation has multiple terms. This is one term, this is other term, there can be two or more terms. That's why, because of presence of number of terms, this linear equation is also known as polynomial, linear polynomial. So we will come to know more about linear equations once we will start doing certain questions. So let's jump to first question. Our first question is this: x plus 3 by 2 equals to 2x. This is first question. See, this question has three terms. Okay, so that's why it is trinomial. Okay, it's a polynomial because it has more than two terms, but as it has three terms, so we can call it as trinomial. Okay, so we will solve this question first. See, we can see that in linear equation, this equals to sign represents that two sides of linear equations are equal to each other. That means left hand side of this linear equation is equals to right hand side of this linear equation. Okay, so as these two sides are equal, we will easily able to find the value of x. Okay, this is term 1, this is term 2, this is term 3. Now there is a term known, there is an analogy which we called as like terms, unlike terms. So what like terms are? Like terms are those terms which has same variables, and the degree of variable are also same. So in this case here, we can see this term and this term has same variable, that is x, and their degree is also 1. So these two terms, this term and this term, are same. So these two terms, they come into like terms. Okay, so we will group these terms together. मैं थोड़ा सा हिंदी में बोल देती हूँ. ये जो दो terms हैं, because इनके variable same हैं, इनके variable के exponents भी same हैं, so we are going to group these terms. इन दोनों terms को एक साथ group किया जाएगा. To group these together, what we will do, ये जो x है left hand side से इसको move out करना पड़ेगा right hand side पर. We have to transpose this x2 from left hand side to right hand side. And friends, we all know one, I'm going to tell you this. जब भी कोई term move किया जाता है एक side से दूसरे side पर, the sign of that term changes to the other sign. Like this here, this term x is positive, it has positive sign. Okay, लेकिन जब इस x को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे मूव किया जाएगा तो इसका पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन में चेंज हो जाएगा. ओके, सो x का जो पॉजिटिव साइन है जब उसको राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज किया गया है, देन द पॉजिटिव साइन ऑफ x बिकम्स नेगेटिव. ओके, सो दीज टू टर्म्स आर ग्रुप टुगेदर. नाउ वी विल डू मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन दिस. 2x minus x means 2 minus 1. x यहाँ पर सिंपल x है, that means इसका जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 है. So 2 minus 1 is 1. So 2x minus x is equals to x, and value of x is equals to 3 by 2, which is an integer.
Okay, we will got this value of 3/2. Now friends, x की value 3/2 तो we got it, but how we come to know कि this is a right value or not? So there is a technique known as verification. इस टेक्निक के थ्रू वी विल कम टू नो कि वेदर हमें जो x जो वेरिएबल की वैल्यू मिली है वो वैल्यू करेक्ट है कि नहीं. सो वी विल लर्न मोर अबाउट दिस वेरिफिकेशन इन अदर क्लास, बट राइट नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. नो, सो लेट्स जम्प टू सम different question. Okay, this is the other question, second linear equation. See, in this equation we have 1 term, 2 term, 3 term, 4 term, 5 terms. This linear equation is made up of 5 terms. Okay, left hand side, this is the left hand side of linear equation, equals to sign, and this is the right hand side of linear equation. Now we are going to solve this. So what we will do, we will solve left hand side separately, then we are going to solve right hand side separately, then we will bring these two together. Okay, so start with left hand side. 7x plus 14 upon 3 minus 17 minus 3x upon 5. As we can see here, in these two terms of left hand side of linear equation, denominators are different. तो जब तक इन दोनों terms के denominator different होंगे, we will not able to solve it further. So to solve it further, सबसे first step जो होगा, we have to make this denominator same. And how इन दोनों denominator को same कैसे बनाया जाएगा? With the help of LCM. We will take LCM of 3 and 5, which is equals to 15. So अब now in next step, what we will do? We will make this 3 as 15. We will make this 5 as 15. How? 3 into 5 is equals to 15. So in this term, we will multiply denominator with 5, also numerator, whole of this numerator with 5. इस पर्टिकुलर टर्म में, एज वी नो, डिनोमिनेटर में 3 है एंड वी हैव टू ब्रिंग 15 हियर. अब 3 को 15 में चेंज करना है तो 3 को 5 से इंटू करना होगा डिनोमिनेटर में. और जब भी we are doing multiplication in denominator, the same number we have to do multiplication of numerator also. This is the rule. This is a thumb rule in mathematics. Okay, so 3 has to be multiplied with 5. Accordingly 5 has to be multiplied with this complete numerator. Okay, जो ब्रैकेट में न्यूमरेटर की वैल्यू है उसके साथ पूरे के साथ 5 को मल्टीप्लाई किया जाएगा. सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट दिस टर्म, इस टर्म में डिनोमिनेटर हैज वैल्यू एज 5. सो दिस वैल्यू हैज टू चेंज टू 15, और इसको 15 को चेंज करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 5 विथ 3, बिकॉज 3 5s are 15, 5 3s are 15. ओके, सो मल्टीप्लाई दिस 5 विथ 3. अब बिकॉज डिनोमिनेटर में 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, सो उसके रिस्पेक्टिवली होल न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना ही होगा. सो दैट्स वी आर डूइंग हियर, डूइंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 टू न्यूमरेटर ऑल्सो. अब इंडिविजुअली हम इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे फर्दर. ब्रैकेट्स ओपन करेंगे. 5 इंटू 7 इक्वल्स टू 35. 5 यहाँ पर पॉजिटिव है, 7 भी यहाँ पर पॉजिटिव है. 5 इंटू 7 इज 35x. ओके, 5 into 14 is 70. Simple multiplication. And 5 into 3 is 15. Denominator, we have solved it. Okay. Now look into this term. This particular term, if we look into it, we can see here there is a minus sign here. So इस minus sign को resolve करना होगा. We have to multiply 3 with these two. Also, we have to multiply minus sign with these two. 3 into 17 is 51. 17 की वैल्यू पॉजिटिव है, 3 की वैल्यू यहाँ नेगेटिव है. तो जब नेगेटिव साइन को पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, वी गॉट द आंसर एज नेगेटिव. सो दैट्स वाई 3 into 17 is 51 and minus sign we have to put it here. So minus 51. Okay. Similarly, 3 into 3 is 9. माइनस एंड माइनस को जब इंटू किया जाता है, जब सेम साइन को इंटू किया जाता है, तो वी गॉट द आंसर इज प्लस. सो माइनस इंटू माइनस इज प्लस. प्लस 3 into 3 is 9. एक्स की वैल्यू एज इट इज पुट डाउन करना है.
and minus into minus becomes plus. So here we got the numerator, we solved it like this, and 3 into 5 is 15. Now we see here is 15 and 5, these denominator are same. अब because denominator अब क्योंकि same हो गए हैं, so we can bring this numerator, whole numerator together. इन दोनों numerators को एक साथ हम we can bring it together. So we have bring it together here in this step. Now we will further solve this step. What we will do, we will bring all the x terms together. 35x और 9x को एक साथ ले लिया जाएगा और जो कांस्टेंट है उनको अलग एक ग्रुप में रख लिया जाएगा. सो 35x प्लस 9x सिंपल एडिशन करना है बिकॉज 35 इज पॉजिटिव एंड 9 इज ऑल्सो पॉजिटिव. सो सिंपल वी हैव टू डू इज एडिशन. 35 plus 9 is equals to 44x. Okay. Now, if we talk about here, minus 51 plus 70. So, one constant is negative and other constant is positive. So, when two constant have opposite sides, opposite sign, one is negative and one is positive. In this case, we have to subtract those two constant. Okay. So, 51 has to be subtracted from 70. Answer is 19. Now we will see that 51 is smaller than 70 and the value of 51 is negative, but 70 value is positive. Sign of 70 is positive. So on the result side, we will bring the value, we will bring the sign of the higher value. Okay, 70 is bigger than 51. That's why 70 is bigger than 51. Also 70 is positive. That's why with 19 we will bring down the value, we will bring down the sign of 70, that is positive. Okay, 70 51 से bigger है. That's why आंसर जो भी आएगा हमारे पास 17 और 51 को सॉल्व करने पर आंसर हमारा जो 19 है, उस आंसर पे जो बिगर वैल्यू है दैट इज 70, उसका साइन रहेगा. 70 के पास पॉजिटिव साइन है, इसलिए 19 के पास भी पॉजिटिव साइन ही रहेगा. दैट्स वाई वी हैव ब्रिंग डाउन द positive sign here. Okay, so our final value of LHS is 44x plus 19 by 15. ये LHS की final value है. Now next step we have to solve RHS. This is RHS. Okay, 6x minus 4x plus 2 by 3 minus 5. We have three terms here: term 1, term 2, term 3. Okay, so our first step is to make this denominator same. Okay, after that only we can solve this equation, otherwise we will not able to solve. So as we see here, denominator is 3, so we will bring denominator 3 here also, we will bring denominator 3 here also. What we will do, simple multiplication. If there is no denominator here, that means denominator is 1. 6x by 1, 5 by 1. Simple, we will multiply 3 with 1 here also. In denominator we will multiply 3 with 1, numerator we will multiply 3 with 6x. Okay, we will ये पूरा जो टर्म है उसको as it is break कर लिया जाएगा. minus 4x by 3 plus 2 by 3. Okay, also one thing I want to keep this, because we are breaking this term. Okay, ये इस term को break किया जा रहा है बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग. अगर हम देखें, okay, so we are breaking the bracket first. सो ब्रैकेट क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज इन ब्रैकेट. सॉरी, आई फॉरगॉट टू पुट दिस ब्रैकेट हियर. दिस इज ब्रैकेट हियर. ओके, सो we are Bodmas rule. According to Bodmas rule, we are opening this bracket. So minus sign has to be multiplied with 4x. Also minus sign has to multiplied with 2. So that's why minus को 4x के साथ में मल्टीप्लाई किया जा रहा है और माइनस को 2 के साथ भी मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 2 के साइन के साथ. So minus 1 into 4x is 4x by 3, and minus 1 into 2 is minus 2 by 3. This is minus 2 by 3. Okay, and this third term 5 here. यहाँ डिनोमिनेटर में वी हैव टू ब्रिंग 3. टू ब्रिंग इट 3, जस्ट मल्टीप्लाई 1 into 3 in denominator. Similarly 5 into 3 in numerator. That we have done here. Simple. Okay, अब इस फर्दर स्टेप को यहाँ फर्दर एक स्टेप आगे हम जा रहे हैं. 3 into 6 is 18. X as it is multiply, we have to do it multiplication. Simple multiplication. 3 into 6 into x. 3 6 are 18. 18 into x is equals to 18x. Simple multiplication.
minus 4x by 3 as it is, we have to put it down. Minus 2 by 3, put it down. Now here comes this term. Minus 5 into 3 is what? 5 3 is a 15, or sign of 5 is minus and sign of 3 is plus. So plus when multiplied with minus, that is minus 15 by 3. We will solve it here. Okay. Now next step, what we will see, as we can see here, these two terms having x variable and these two terms are completely constant. So we will solve variable terms separately and we will solve constant terms separately. ठीक है, ये जो दो टर्म्स है इनके पास x वेरिएबल है तो इनको सेपरेटली हम सॉल्व करेंगे, और ये जो दो टर्म्स है ये कांस्टेंट हैं, इनके पास कोई वेरिएबल नहीं है, ये these are like terms and these are like terms. So these like terms has to be solved separately and these two has to be solved separately. Simple. ग्रुप कर लेंगे इनको. 14x माइनस 4x अपॉन 3 माइनस 2 माइनस 15. सी माइनस 2 और माइनस 15 के माइनस 2 के पास माइनस साइन है और 15 के पास भी माइनस साइन है, बिकॉज साइन दोनों नंबर्स के सेम है, दैट्स वाई दोनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे और साइन उनका एज इट इज यही ड्रॉप होगा, दैट इज माइनस. तो 2 को 15 के साथ ऐड किया है तो 17 आएगा, और दोनों के साइन जो सेम है दैट इज माइनस, वो उसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे यहाँ. ठीक है, तो दिस हाउ वी सॉल्व अवर नेक्स्ट स्टेप. नाउ नेक्स्ट इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे. 18x माइनस 4x इक्वल्स टू 14x. सिंपल सब्ट्रैक्शन है, 18 को 4 में से माइनस कर दिया है और x को एज इट इज पुट कर दिया है अपॉन 3. सॉरी, दिस इज 17 by 3. आई जस्ट 17. Okay, this is minus 17 by 3. So further उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो we got it as 14x minus 17 by 3. So this is our LHS and this is our RHS. अब this LHS and this RHS has to bring together because अब further हमें इसको solve करना है. This is how we will bring together 4x plus 19 by 15 which we got from here, and this term 4x minus 17 by 3 which we got from here. Okay, so we will bring these two terms together. Bring these two terms together, and now further we will solve these two terms. Okay, so we are solving these terms. What we will do, simply we will find the LCM of 15 and 3. So 15 and 3 LCM is 15. So what we will do, 15 is present here, but to make this term equal to इस ये जो टर्म है इसका डिनोमिनेटर 3 है, एंड टू मेक दिस डिनोमिनेटर इज 15 वी हैव टू डू सम मल्टीप्लिकेशन इन दिस टर्म ओनली. ये टर्म को एज इट इज कॉपी कर लेंगे नीचे, उसमें कुछ नहीं करना है ऑपरेशन. जो टर्म ऑपरेशन करना है वो इस टर्म में करना है, बिकॉज इस टर्म में डिनोमिनेटर की वैल्यू को 15 में कन्वर्ट करना है. हाउ? सिंपली 3 5 is 15. सो मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 5, एंड जब डिनोमिनेटर को हम 5 नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो इट्स ऑब्वियस कि न्यूमरेटर को भी हमें 5 नंबर से ही मल्टीप्लाई करना होगा. सो दैट्स वी आर डूइंग दिस हियर. मल्टीप्लाई 3 by 5 which we got as 15. Now multiply in numerator, we will multiply 5 into 14 which is 70x. Simple multiplication. Now if we come to multiplying 5 into 17, we got as 85. 5 has positive sign, 17 has negative sign. Positive into negative is minus 85. Okay, when positive sign multiplies with negative sign, we got the answer as negative. Okay, we will study more on these signs in other class, but just understand this. When two different signs are multiplied, we got as negative, and when two minus signs are multiplied, we got as positive. When two unlike signs, that is plus or minus, is multiplied, we got as negative. Okay, here positive and negative sign is being multiplied, that's why we got as negative. Okay, now further we will solve. Now these two denominator are same, so we can cancel this denominator here because these are same. Okay, we will bring this denominator here. यहाँ 15 है, 15 denominator, 15 is in denominator
एंड व्हेन इट इज कम टू अदर साइड, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जब उसको ट्रांसपोज किया जाएगा तो the mathematical operation from division will it becomes to multiplication. Okay, so 15 we simply cancel it, 1 15 ones are 15, we will cancel it, and this is our final remaining. Okay, this is further step. Now we can see there are 4 terms here. 44x plus 19 is equals to 70x minus 85. Now what we can see here, we will bring this x term together and constant together. Simple. So take this 70x to one side. 70x को जब हम मूव करेंगे दूसरे साइड पे तो obviously the positive sign of 70 will change to negative. So here positive sign of 70 will change to negative, that we have done here. And similarly positive sign of 19, constant 19 will change to negative when we move to other side. We have done this here. 44x minus 70x, because those two terms have different signs, we will subtract these two terms. इन दोनों टर्म्स के साइंस डिफरेंट हैं. 70 नेगेटिव है, 44 पॉजिटिव है, इसलिए 70 में से 44 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा. अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन होता तो फिर हम उनको ऐड करते हैं, क्योंकि इन दोनों के जो साइंस है वो सेम है. बट अभी केस में दोनों टर्म्स में साइन डिफरेंट है, इसलिए हम 70 में से 44 को माइनस करेंगे. सो वी हैव डन दैट. 70 माइनस 44 इज 26x. माइनस साइन यहाँ नीचे क्यों आया? बिकॉज 70 इज बिगर देन 44 एंड बिगर नंबर के पास जो साइन होगा वो आंसर में साइन होगा. तो 26 के पास माइनस का साइन आया है बिकॉज 70 के पास माइनस साइन है. सो वी हैव ड्रॉप डाउन दिस माइनस साइन हियर. नाउ 19 और 85 दोनों नेगेटिव है. 19 भी नेगेटिव है, 85 भी नेगेटिव है. तो सिंपली हम नंबर्स को ऐड कर देंगे और माइनस साइन को नीचे ड्रॉप कर देंगे. सो 1985 को ऐड किया, सो वी गॉट इट एज 104 एंड माइनस साइन को एज इट इज ड्रॉप कर दिया. यहाँ पर साइंस जब एज वी नो कि साइंस जब पॉजिटिव होंगे सो नंबर्स विल ऐड, सॉरी साइंस जब सेम होंगे सो नंबर्स विल ऐड, एंड साइंस जब डिफरेंट होंगे सो नंबर विल सब्ट्रैक्ट. ओके, we will take one session on these kind of operations जिस पे सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चंस किए जाएं, सो दैट जो साइंस के ऊपर कन्फ्यूजन्स हैं वो सारे सब क्लियर हो जाएं. we'll take this session on later, but right now we focus on here. So yeah, so we got answer is minus 26x and here minus 104x 104 minus 104. Now this 26x and 104 we have solved. We are at the last step of the solution. So this is minus and this is minus, so this minus will be cancel out. Okay, because